basically, unit number 5 is your government's macroeconomic intervention. This is basically your discussion of how government intervenes, mainly using the fiscal, monetary, and the supply side, very much um, connected to the previous essay lines, which was about the macroeconomy and ADAS and how the other macroeconomic objectives get affected. So today's class, you might find a lot of like similarity as to what we've been doing lately. ठीक है? But today's class, we are going to focus a lot more on the fiscal and the monetary and supply side policy or uski nitty gritties के अंदर, which we have not done in our previous line of essays. ठीक है? And then we're going to move on towards the international economic issues in which we'll talk about protectionism and all of that. ठीक है? That is going to come later. So let me just start with the first uh, question, how to go about it. लिखते हैं ये लोग. Explain what is meant by monetary policy and consider the difference between monetary and fiscal policy. Now, from the background, you know, ये गवर्नमेंट की दो मेजर पॉलिसीज होती हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट की एडी को अफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, राइट? So if we're talking about what is meant by monetary policy, so we know that monetary policy basically has, so in your essay, the first thing you're going to be talking about is the monetary policy के अंदर जो है, basically it's a government's tool which is used to impact aggregate demand. ठीक है? It's a much quicker policy. It has an effect in the short run. ठीक है? What it does is that it impacts CIG minus M को somehow, right? And monetary policy के अंदर there are two things. One is the money supply, and the other thing is the interest rate. It is usually set by the central bank. ठीक है? What you might come across is money supply, interest rate, credit regulation, राइट? ये तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं असल के अंदर. ठीक है? So we want to obviously have a much larger discussion on this. कि money supply, basically we're talking about the amount of the total amount of money in a country, right? This is what we're talking about. And when I say total amount of money, तो इसके अंदर जो है आपका basically जो circulation के अंदर पैसा होता है economy के अंदर जो हम use करते हैं goods and services के लिए, so coins, notes, deposits, इस तरह की चीजें होती हैं. ठीक है? दूसरी तरफ जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट वी नो इज द प्राइस of borrowing money. ठीक है? क्या प्राइस, क्या अगर मैं किसी से पैसे बोरो कर रहा हूं तो मुझे उसको कितने पैसे इन रिटर्न देने, एडिशन टू whatever I have to pay back in principal terms. फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं क्रेडिट रेगुलेशंस की, तो क्रेडिट रेगुलेशंस बेसिकली जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को सर्टेन रूल्स देती है कि आपने जी लैंडिंग करते हुए इजी लैंडिंग करनी है लोगों को पैसे, या थोड़ी सी टफ क्राइटेरियाज की बेसिस के ऊपर पैसे आपने लैंड करना है. तो ये थोड़े से इसके अंदर जो है, कभी सेंट्रल बैंक अगर पैसे को टाइट करना चाहती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करने जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर जो है
वो कमर्शियल बैंक्स को कहेगी कि आप अगर लोगों को पैसे लोन आउट कर रहे हैं टू गेट अ कार, तो फिर आप मेक श्योर करें कि बंदा जो है एक स्टेबल नौकरी में है, 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, या फिर उसकी कम से कम मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए वो बेसिकली गाड़ी की पेमेंट की इतने टाइम ज्यादा होनी चाहिए। सो अलोंग दोज लाइंस, सो बेसिकली इससे भी जो है बैंक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंसिडर, ये AO1 मैंने बेसिकली आंसर कर दिया है। ठीक है। When I go to AO2, AO2 के अंदर I'm going to look at, consider the difference between the monetary and the fiscal policy. तो a few things about them, what we need to know. I think यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी को भी थोड़ा सा इंट्रो दे देना चाहिए, बट शुड वी गिव एन इंट्रो इन टर्म्स ऑफ के वी राइट अबाउट के फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और शुड वी टॉक अबाउट कि उसके अंदर फिस्कल पॉलिसी और उसका कंपैरिजन करें मॉनेटरी का एट एवरी लेवल। सिमिलैरिटीज तो हमें पता है कि दोनों एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है, एंड दोनों जो है शॉर्ट रन होती है। ठीक है, बट वी नो द डिफरेंस। सो मैं यहाँ पे जो मेरा राइटअप होगा AO2 के लिए, इट्स गोना बी समवॉट लाइक दिस। व्हाट आई विल से इज के फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं, वन इज ऑब्वियसली द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, which basically obviously talks about कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है आपकी जो पब्लिक गुड्स वगैरह के ऊपर स्पेंडिंग होती है, या गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है ऑन मेरिट गुड्स में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक गुड्स के अंदर आ जाता है उसको प्रोवाइड करने में यूटिलाइज होता है। सो तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है थोड़ा सा जस्ट फॉर इंट्रो पर्पसेस, फिस्कल पॉलिसी भी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है, एंड यूजुअली ये भी शॉर्ट रन के अंदर ही इफेक्टिव होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो डायरेक्टली AD के अंदर G को इम्पैक्ट करता है, इट्स मच मोर डायरेक्ट कंपैरेटिवली। ठीक है। जहां तक हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग we're talking about government's expenditure on public merit and other private goods। इसमें consumer goods, capital goods, सब सारी चीजें जा सकती है, by the way। ठीक है, and on the other hand, the government, the other tool is, sorry, I'm writing tool, is taxes। अब टैक्सेस के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास कई किस्म के टैक्सेस हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस के अंदर यू हैव बोथ द डायरेक्ट टैक्सेस जो ऑब्वियसली इनकम रिलेटेड होते हैं, ओके, इनकम रिलेटेड टैक्सेस, एंड देन यू आल्सो हैव द इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पोज होते हैं। Right, so we know, okay, there are two possible things over here. So in a nutshell, what I would do is, just because I've explained these two, comparison मैंने बनाया कि नहीं बनाया, so what I would do is, once I've done this, तो मैं एक comparison बना लूंगा कि from the differences point of view, difference is in the tools government has in both these policies. For example, fiscal policy has government spending and taxes, while monetary policy has
मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ये जो मैंने क्रेडिट रेगुलेशन की बात की है, देखो क्रेडिट रेगुलेशन जो है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ वन मोर टाइम। जो क्रेडिट रेगुलेशंस होती है वो ये होती है कि भाई मैं पैसे टाइट करना चाहता हूँ इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के तौर पे, लेकिन मैं डायरेक्टली पब्लिक से तो डील नहीं करता हूँ। पब्लिक से कमर्शियल बैंक्स डील करती हैं और कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक डील करती है। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रूल्स बताती है कि आपने कैसे लोन आउट देना है, कितना लोन आउट देना है, कौन सा आप प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो वो आप हमसे अप्रूवल लेंगे और फिर आप नीचे सेक्टर के अंदर उसको स्प्रेड करेंगे फॉर फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, राइट। तो फिर वो सेंट्रल बैंक उनको बताता है कि आपने किस बेसिस के ऊपर रेगुलेशंस वगैरह करनी है। Do you understand that? So first thing is this. If I talk in terms of इनके कंपैरिजन के अंदर, दूसरा कंपैरिजन इनके बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? आई थिंक डिफरेंस बोला है, कंपैरिजन नहीं बोला, डिफरेंसेस बोला है। यस, सो आई बी वेरी particular about it. Another difference that we have is, I have talked about this plenty of times before also, that fiscal policy जो है वो, सॉरी, Keynesian school of thought से relate करती है। They feel that you should be using the Keynesian school of thought says कि fiscal policy use करें, government spending and taxation आप use करें, it's going to have a much more impact, much more direct comparatively, right? So you could suggest that it's a lot more direct, as government spending is a component of aggregate demand. Government has control on which sector or region they want to spend on। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हैदराबाद के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है बिकॉज वहां उस रीजन के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, वहां बेरोजगारी ज्यादा है। या फिर सियालकोट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सियालकोट के लिए थोड़े से टैक्स में रिलीफ कर सकते हैं। या फिर लेट्स डू टैक्स रिलीफ इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। सो मच डायरेक्टली आप इम्पैक्ट कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर सर्टन सेक्शंस को। सो यू सी कितना गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेफर किया जा रहा है इसके अंदर। बट दूसरे एंड के ऊपर जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये ज्यादा न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, जो मिल्टन फ्रीडमैन जो मोनेटरिस्ट भी है, न्यू क्लासिकल मोनेटरिस्ट है, ये उससे ज्यादा रिलेट करता है। और न्यू क्लासिकल जो नियो क्लासिकल से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा फ्री मार्केट आइडिया ज्यादा पसंद है, राइट। सो फॉर देम दे से जी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को आप अफेक्ट करें, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर्स हैं, जिनके पास, जिनको लगता है, जिन बिजनेस ओनर्स को लगता है कि हमें एक्सपैंड करना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लेट्स गो एंड बोरो मनी, राइट। इट्स वेरी ओपन एंडेड, गवर्नमेंट डज नॉट नो कि कौन बोरो करेगा, कौन स्पेंड करेगा। पीपल विल कम बेस्ड ऑन देयर नीड्स, so इट्स अ लॉट मोर ऑन द फ्री मार्केट साइड। अब वो सी को अफेक्ट करता है, जी को अफेक्ट करता है, आई को अफेक्ट करता है, कौन से एलिमेंट को अफेक्ट करता है एडी के, ये आपने मार्केट पे छोड़ दिया है। सो इट्स मोर इनडायरेक्ट एज इट impacts CIG component of AD. So it's much more indirect. Government does not
have control over their effect. ठीक हो गया? So that is that. फिर उसके बाद आई थिंक दीज आर रिलेटिवली अच्छे डिफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे सजेस्ट कर दिए हैं. इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो. ठीक है. उसके बाद लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन एम आई आंसरिंग एक्सप्लेन एंड consider the difference between. I think we have considered the difference between them. Should we talk about the evaluation? Evaluation kya hai? Consider the difference between. I think we have considered the difference in them and how they're going to have an impact. I don't know what to maybe suggest a little bit of their effectiveness, I guess, because I can't think of anything else क्योंकि उन्होंने clearly नहीं लिखा हुआ. तो अगर उनके differences की बात कर रहे हैं तो maybe I would like to suggest in their differences a little bit on their effectiveness, that how effective fiscal policy can be. तो I could have done this right over here जब मैंने इनकी policy suggest की है या उसकी differences की बात की है. So what I could do is मैं यहाँ पे इसकी evaluation suggest कर सकता हूँ कि जब आप फिजिकल पॉलिसी लगाते हो थ्रू टैक्सेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफेक्टिवनेस जो है इसकी डिपेंड्स ऑन हाउ कंज्यूमर में react to rising taxes. क्योंकि अगर मैंने टैक्सेस बढ़ाए तो नॉर्मल थ्योरी कहती है टैक्सेस बढ़ाओगे डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगी एंड ऑल, राइट? But what I'm suggesting over here is that we don't know how consumers react, so the effectiveness of how will this policy is going to have an effect is on how the consumer reacts um, to price rising. Maybe they might not respond the way um, maybe they not respond the way the government was expecting. Again, दूसरे एंड के ऊपर जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप चेंज करना चाह रहे होते हो तो यू नो इफेक्टिवनेस के अंदर आई माइट इवन सजेस्ट दैट समटाइम्स government may not be able to change its spending as it may already be at minimum. तो they're already spending at the lowest level और फिर आप जो है you know और कोई further उसमें cut down कर नहीं सकते. You're sort of like dependent on it. Honestly बहुत बड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर because ये considering वाला पार्ट जो है इसके अंदर इसकी इफेक्टिवनेस हो जाती है. जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है, देखो इसकी भी पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है वो काफी सिमिलर है टू दिस, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई चेंज करते हो तो इसके अंदर जो है ज्यादा अनसर्टेनिटी है, राइट? देयर इज मोर अनसर्टेनिटी as consumers and firms may not respond as expectation. Sorry. Right. I feel that I've done too much for this question. Now, I think इसके अंदर definitely बात I'm still thinking कि इसमें हो सकता है कि आप उसकी भी बात करनी पड़े तुमको, expansionary and contractionary की. जब ऊपर थोड़ा सा ये बात कर रहे हो ना इंट्रो के अंदर, तो उसी के अंदर ही you might wanna like sort of like have a suggestion on कि क्या होगा. ठीक है. So this is one of my opinion as to how you can go about this essay. बहुत कुछ लिखने को है.
So you go and write it accordingly. Discuss what effect reducing the rate of interest might have on the equilibrium national income. Equilibrium national income. Should we make a diagram for this one? I guess we should make a diagram for this one. इंटरेस्ट रेट के थ्रू अगर आप करने जाते हो तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस ऐसे इज गोना बी अगेन यू हैव टू आंसर इन टर्म्स ऑफ लेवल्स राइट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का आंसर है so the first thing you need to know about what monetary policy is going to do is कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम किया है तो aggregate demand के अंदर increase आना चाहिए because of that. So first thing what you're going to be talking about is because interest rate, if it's fallen down, then you know there are, in fact, you can take this in two directions. Okay? Number one, cost of borrowing is going to, oh, interest rate come ho raha hai, बढ़ रहा hai, reducing. Cost of borrowing is going to fall, which may lead to higher borrowing, which is going to lead to more consumption, more business investments, and may lead to increase in aggregate demand. First thing is this. Second connection you can have is lower interest rate means lower cost of production because businesses usually, on a whole, lower cost of production, which is going to increase the aggregate supply. ठीक है. So based on these two impacts, if both of these impacts happen simultaneously, price level, real output, your real GDP, let me write the whole thing. I think you should write the whole thing also. Let's not take chances with the examiner. Price level, aggregate demand, aggregate supply. By the way, I think I should talk about initially ये तो इन्होंने बात की है ना equilibrium क्योंकि macroeconomics है तो they're obviously talking about macroeconomic equilibrium, right? I think we should talk about it. That's the first thing we should have talked about in this one. Yeah. So the first thing I think you should define is macroeconomic, and I think मैंने last class के अंदर I did in one of the essays also कि macroeconomic equilibrium क्या होता है जब आप कहते हो कि aggregate demand and aggregate supply intersect करते हैं और उस price level के ऊपर जितनी real GDP produce हो रही होती है उस price level के ऊपर and hence shown in the diagram below. So फिर उसके बाद what might happen to the equilibrium? Discuss करो the effects. Discuss what effects reducing. I think इसके अंदर मेरे को macroeconomic objectives पे भी जाना पड़ेगा. So there are a couple of ways in which I can go into this question. Right. So what I'll do is I'll have a discussion on first कि अगर सिर्फ और सिर्फ AD बढ़ता है तो मेरा macroeconomic equilibrium moves from EO to E1, which means the price rises from PO to P1. Price level rises. And real GDP also rises. ठीक है? So I can make a comparison to these two things. पहले तो मैं इसकी suggestion दे सकता हूँ. ठीक है? So price level rises, real output increases, employment increases. थोड़ा macroeconomic को भी मैं डाल देता हूँ, but again, equilibrium national level को क्या हुआ is what I've spoken about. I have a habit of doing this. You can also कि जब भी हम बात करते हैं कि जी ये देखें
equilibrium जो है aggregate demand shift आया, so what happened was that initially the AD was greater than AS, which created an excess demand, which caused the prices to go up, right? I can talk in terms of that. फिर उसके बाद along that एग्रीगेट सप्लाई भी हमने कहा इंक्रीज होगी अगर ऐसा होगा अब तुम्हारी मर्जी है कि दोनों को साइमल्टेनियसली दिखा दो या सेपरेट डायग्राम्स में दिखा दो what I'll do is I'll show it in this one only because they haven't asked for a diagram. I'm just using it for supporting purposes. Would you get mark in this one? Supporting तो है क्यों नहीं है so basically then what I can discuss is कि किस तरीके से जब AS भी बढ़ेगा we move from E1 to E2 and basically what happens is the price level falls down and real GDP increases even further. ठीक हो गया तो ये तो उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई की वजह से प्राइसेस नीचे जाती हैं और रियल आउटपुट भी बढ़ता है नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस क्वेश्चन इज कि मैंने लेट्स गो बैक discuss the effects reducing the rate of interest might have on equilibrium. Now what I'm going to talk about is कि it depends on the size of impact it creates. That would be my evaluation, I believe. That it depends on the कि equilibrium पे कितना बड़ा impact आएगा depends on the size of shift in AD and AS, right? If obviously aggregate demand increase is greater than aggregate supply ka increase, so what's going to happen is overall price levels will rise while the real output will still increase. However, if aggregate demand shift is less and aggregate supply shift is more, overall, the prices are going to fall while overall output is going to increase. So I can conclude that real GDP will increase right? So real GDP will increase. So along this line, because again, the question is missing some clear direct direction. जो उसने कहा आई फील वी हैव आंसर्ड कि डिस्कस करो मैंने डिस्कस किया है कि क्या इफेक्ट्स आएंगे इंटरेस्ट रेट कम करने के ऑन द इक्विलिब्रियम दे वेरी स्पेसिफिक मैं तो थोड़ा सा इसको वन स्टेप आगे लेके गया हूँ और फिर मैंने थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी बीच में ले आया बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ shows those and I've done the diagram also. I feel it's a pretty decent answer that I've done. Obviously then और भी चीजें वैल्यूएशन में हो सकती हैं कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट किस हद तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा कंज्यूमर वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे बट वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट इन पार्ट ए so I'll keep it a very technical answer in that sense. Okay, so that's our first essay. Let me take a look at another one. थोड़ा सा oh wow ये क्या है फिजिकल पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा टारगेट किया है इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर एंड देयर टॉकिंग अबाउट देखो इस किस्म का क्या क्वेश्चन बन सकता है क्यों नहीं बन सकता दे वुड वांट टू टेस्ट यू क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस एंड देव एडेड दिस स्टफ कि explain the difference between government's capital and current spending and consider the reasons for government spending गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती है ठीक है so one thing that I would want to talk about over here is कि ये दोनों government I'll use GC for it and CS for it please don't confuse me I just wanna government capital spending and the current spending both
are part of the fiscal policy. ठीक है, ये गवर्नमेंट की जो बजट होता है, इट इज पार्ट ऑफ द बजट। बजट के अंदर जो बेसिकली जी की वैल्यू होती है, दिस इज हाउ इट्स ब्रोकन डाउन। ठीक है, ना दे हैवंट आस्क्ड अबाउट कि गवर्नमेंट का क्या डायरेक्शन वगैरह है, बट दिस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। अब जब गवर्नमेंट खर्चे करती है, तो गवर्नमेंट के खर्चों के अंदर, फिस्कल इसके अंदर एक होती है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है, वो यूजुअली होती है गवर्नमेंट की ऑन, एक तो मशीन्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो दिस वन वुड बी बाय डेफिनेशन government spending, government spending on investments in public sector. Example, hospital, uh, schools, infrastructure वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो जाती है गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जाती है दूसरी करंट स्पेंडिंग। अब जो गवर्नमेंट की करंट स्पेंडिंग है, उसको ये लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टेट फाइनेंस सर्विसेज। जो बेसिकली गवर्नमेंट को रन करने का खर्चा होता है ना, गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो भी रन करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल चलाना है, उसके खर्चे गवर्नमेंट चलानी है, मिनिस्टर्स उनके जो स्टाफ होते हैं उसके पैसे, हॉस्पिटल चलाना है तो डॉक्टर्स वगैरह के पैसे, बेसिकली ऑपरेशनल स्पेंडिंग होती है। ठीक है, सो जहां तक बात है गवर्नमेंट की करंट स्पेंडिंग, ये जो करंट स्पेंडिंग होती है, ये बेसिकली स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक running operations of hospital, including salary and medicine expenditure, इस तरह की जो एक रनिंग कॉस्ट होती है। तो कैपिटल स्पेंडिंग क्या होगी? कैपिटल स्पेंडिंग इज गोना बी स्कूल बनाने के पैसे, और करंट स्पेंडिंग विल बी उस स्कूल को चलाने के पैसे। ठीक है, सो ये तुम्हारी दो बेसिकली स्पेंडिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप ब्रेक डाउन करते हो। क्या इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स जाना चाहिए? इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं जाती हैं। जो सी आई जी एक्स माइनस एम के अंदर, एडी के अंदर ये जो जी होता है और जो बजट की स्पेंडिंग होती है, इसके अंदर हम ज्यादातर करंट और कैपिटल को लेते हैं। लेकिन लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स भी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ही खर्चा कर रहा है ना। तो स्टेट पेंशन हो गए, मुल्क के ऊपर कर्जा है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, चाइल्ड सपोर्ट हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ओवरऑल वैसे तो ये भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हिस्सा होती है, लेकिन सी आई जी वो उसका हिस्सा नहीं होती। लेकिन टोटल गवर्नमेंट का जो बजट बनता है ना, वो बजट, इसको मैं चलो ऐसे कह लेते हैं, ए टूज के अंदर व्हाट दे यूज इज, द टर्मिनोलॉजी दे यूज इज नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो उसमें आप ये पेंशन वगैरह नहीं लेते हो, ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस कर देते हो, ट्रांसफर पेमेंट्स जो ये फ्री का पैसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, ऑब्वियसली उसके अंदर आप इंक्लूड करते हो। अब फर्दर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट लेकिन
नोट बुक्स के अंदर इन्होंने यही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और फर्दर ब्रेक डाउन किया है इनटू एग्जॉस्टिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव। ठीक है कि एक होती है एग्जॉस्टिव स्पेंडिंग कि गवर्नमेंट ने जाके मेडिसिन खरीदी, मेडिसिन को बनाने में रिसोर्सेज यूज हुए हैं, आपने मेडिसिन कंज्यूम की, वो मेडिसिन खत्म हो गई, वो रिसोर्सेज यूज अप हो गए, और वो गवर्नमेंट ने जाके डायरेक्ट परचेजिंग की उसकी। ठीक है। जो नॉन एग्जॉस्टिव होती है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो दूसरों को अलाउ करती है कि आपने किस तरह से रिसोर्सेज वगैरह को यूज करना है, you can decide on your own how you want to do it. ठीक है, but I would, you know, this one looks a little irrelevant comparatively. Um, Government की capital spending and current spending is more important for this question particularly. And consider the reasons for uh, and consider the reason. अच्छा, by the way, explain the difference between again ये जो दो मैंने किए हैं. I would like one एक single line after this in which I would, you know, maybe sum up या इसको लिखना इस तरीके से कि दोनों का comparison बन रहा हो. One is spending on investment while the other one is spending on government spending. Uh, आई थिंक एक आखिरी में पैराग्राफ लिख दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है. ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने अभी रिसेंटली तुमको दिखाया भी था ऐसे इसके अंदर कि एग्जामिनर माइट नॉट इवन लुक एट दैट कंपैरिजन. एक में तो नहीं देखा था लेकिन आई टोल्ड यू कि मैं तो देखता एज अ चेकर. ठीक है. तो मेक श्योर कि कंपैरिजन या डिफरेंस लिखा है तो यू स्पेल आउट के जी ये डिफरेंसेस हैं इनके बीच में. कंसिडर द रीजंस फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. भाई बहुत सारे रीजंस हैं. तीन रीजंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि गवर्नमेंट की रीजन फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. रीजन फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये कोई वो कैपिटल स्पेंडिंग नहीं है वगैरह. So one is that maybe the government wants to increase aggregate demand because they want a growth cycle or something like they want an economic growth to go up or something along that line, right? So they want थोड़ा सा इसके ऊपर expansion करोगे कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रही है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, तो दैट वुड बी अ पॉसिबल थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर. एक ये हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दूसरा ये हो सकता है ट्रांसफर पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू कर रही है, तो क्यों कर रही है? ऑब्वियसली वेलफेयर लोगों का इंक्रीज करना है, वेलफेयर या जो सोशल इफेक्ट है उसको इंक्रीज करना है, और मे बी दे वांट टू sort of like reduce they want to reduce uh, inequality, right? Maybe that's what they're aiming for. So that would be a good explanation. Second उसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ. और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट एक थोड़ा सा मेरिट डीमेरिट की तरफ भी कर सकते हैं. मेरिट गुड स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है. वाई? बिकॉज आपको पता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी क्रिएट होती हैं उसके अंदर, और उस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी गोज अप, उसकी वजह से आपकी जो सोशल बेनिफिट है दैट आल्सो गोज अप एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. एंड ऑब्वियसली दैट वुड लीड टू मे बी लाइक लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा एंड ऑल ऑफ दैट. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लिख सकते हो एज टू व्हाई द गवर्नमेंट वुड वांट टू स्पेंड. ठीक है. तो दिस वुड बी द रीजन बिहाइंड इट. अगेन दे आर नॉट मेंशनिंग कि evaluate क्या करना है. If I had to like maybe let's say they might suggest something like इंटरनेशनल competitiveness through firms investments. तो उसमें अगर गवर्नमेंट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाती है which might facilitate businesses to become more competitive, agreed. ठीक है.
सब्सिडीज भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू सब्सिडीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। आई थिंक अगर इसके अंदर अगर इवैल्यूएटिव कोई पार्ट हो सकता है तो यू माइट वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन आउट ऑफ दीज थ्री व्हिच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्हिच वन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये तुम्हारी इवैल्यूएशन इसकी बन सकती है फॉर 2 मार्का। तो फिर उसके अंदर वी वुड लाइक यू टू हैव सजेशन ओवर हियर ऑब्वियसली कि कौन सी वाली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू फील, डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन सा रीजन लिखा है। अगर तुमने कोई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है तो फेयर इनफ, गो फॉर दैट वन। अगर तुमने कोई तीन ऐसे लिखे हुए हैं एंड देन यू फील के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और वाला हो सकता है तो माइट एज वेल गो फॉर दैट वन। व्हाट आई विल डू इज आई वुड डू के मे बी if the economy evaluation के अंदर from the most important point of view I would say कि if the economy is going through recession, then increasing aggregate demand would be the most important one because it will have major impact on macro objectives. However, agar recession nahi hai and economy is growing, then that's the worst thing you can do. And then finally, you can conclude. So, can you have a question like evaluation from the point of view of consider why a government may have a higher spending on capital than consumer? बिल्कुल हो सकता है। Consider whether या फिर ये हो सकता है कि या consider whether government should always have higher government capital spending than current spending। ये भी हो सकता है question, जबरदस्त है। So you might want to suggest again that really depends on the country's need. If the country, for example, पाकिस्तान के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने वेरियस गो स्कूल्स बना दिए हैं, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग कर देती है स्कूल बनाने के अंदर टू शो ऑफ कि हमने देखो स्कूल्स बनाए, लेकिन वहां जाके देखो तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चल ही नहीं रहे हैं, वहां के लोग शहर आ रहे होते हैं। तो क्लियरली उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर व्हाट वी से इज कि गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग इज असेंशियल, बट you have to have current spending in place to maintain those things. I would say कि तुम्हारा जो overall answer का idea होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। You know, that's a good application of this government capital and current spending. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो है आप बजट सारा खर्च कर दो। ये इसमें obviously corruption भी बहुत ज्यादा होती है वगैरह। But along those lines, you want to talk about. You need to have a good balance, right? You want to have a good balance. Usually, developing countries के अंदर capital spending जो है उसका proportion ही वैसे बहुत कम बचता है because government की overall current spending ही बहुत ज्यादा होती है। Taxes के हिसाब से they don't even have enough sort of money, right? तो तो फिर वहां पे ये फिर issues होते हैं। So you can have your discussion on that depending on किस तरह का question आ जाता है। ठीक है, then your answer question का एक और element देख लेते हैं। Okay, now this one is talking about discuss the likely effects of an expansionary fiscal policy on the economy, right? So Pehla part is not really talking about it, but we have sort of like mentioned के ये जो ऊपर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की बात कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। बट इन दिस वन आई वांट टू गो मच मोर इन डिटेल्स। जो अभी हमने पीछे बात भी की है कि फिस्कल पॉलिसी दो टूल्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और टैक्सेशन होती है, and everything that went on with it,
और ये दोनों पॉलिसीज जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट रन के अंदर। आई टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो कि ये अच्छा एग्जामिनर को इम्प्रेशन जाएगा कि ये केन्जियन थ्योरी के अंदर आ जाता है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है, ठीक है। और अगर हम एक्सपेंशनरी की बात करें तो एक्सपेंशनरी इज अबाउट मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग and less government taxation, both direct and indirect. By the way, progressive regressive was also part of your post. I haven't dealt with any essays on that. तो उस पे भी सवाल बिल्कुल बन सकता है. So if I'm going for expansionary, obviously aggregate demand is going to increase. Then what is the likely impact of this? बनाते हैं, दिखाते हैं. What is the likely impact? क्योंकि ये question 12 mark का है, तो I'm going to be using this LRAS वाला diagram in this explanation. Should you do both? I don't know. It's up to you. क्योंकि likely effect की बात कर रहे हैं, तो I would want to go for this one. And to show how if the economy is, if it's at high unemployment levels, well below the potential, as we can see, diagram की explanation होनी चाहिए. And if you do expansionary fiscal policy over here, the impact is really high economic growth. सही है, I can do it like stage 1 and stage 2 की बात कर लेता हूँ. So I can suggest that in stage 1, if I increase aggregate demand, price level remains the same, while my economic growth increases substantially and my unemployment falls significantly. However, if this policy is used when the economy is already at its peak, and if I increase aggregate demand at stage 2 when we're at full employment, तो उस केस के अंदर जो है, that is not going to be favorable for the economy. These terms will be good if you mention, because if now you're increasing aggregate demand, price level sort of like shoots up and nothing happens to economic growth and unemployment, nothing happens. वैसे तो आप full employment के ऊपर हो, so I would want to suggest nothing happens to employment, will remain same at full employment levels. So ये मैंने AO1, AO2 के लिए I think this is what I would explain. And then for my evaluation, I would want to talk about the fiscal policy की effectiveness, like what is the fiscal policy के problems क्या हो सकते हैं, right? So I would want to suggest something like that कि fiscal policy के issues हैं क्या. तो जब हम fiscal policy की issues को discuss करते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ चीजें बात करते हैं. Let me write a few for evaluation. Limitations of fiscal policy. Okay. One of the problems that we can have is जो के ऊपर थोड़ी बहुत बात हो गई है, but I want to talk specifically about fiscal policy के issues. Like उसको impose करने में क्या problem आएगा. We talk about there is a time lag element over here. Time lag का element क्या होता है कि by the time the government recognizes problem, decide policy, implement it, or impact. Think about it. पहले recognize किया कि economy को बढ़ाने की जरूरत है, it's going to slow, तो फिर टैक्सेशन लगाना चाहिए, गवर्नमेंट टैक्सेशन कम करना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए. Okay, let's implement it. You implement it, and then by the time the impact comes, there is a time lag involved in it. दूसरे एंड के ऊपर ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, प्रिडिक्शन कितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, साइज ऑफ स्पेंडिंग रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा
मुश्किल काम है गवर्नमेंट के लिए. Sometimes they might end up spending too much. Sometimes they might end up spending too little. So इसके अंदर एक ये भी होता है. टाइम लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो उसका इम्पैक्ट आने में जो इकोनॉमिक साइकिल्स में थोड़ा वक्त लगता है उसको आने में, जिसको मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाय द टाइम यू रिकॉग्नाइज, यू डिसाइड द पॉलिसी, यू इम्प्लीमेंट, एंड उसका इम्पैक्ट आने में एक वक्त गुजर जाता है जो तुम्हारी इकोनॉमिक साइकिल के अंदर तुम्हारी प्रिडिक्शंस को ऑफ कर सकता है. उसी तरह से गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करेगी, कितनी स्पेंडिंग करने की जरूरत है, कहाँ स्पेंडिंग करने की जरूरत है, उसमें भी गवर्नमेंट के एरर्स हो सकते हैं. तो ये एक एक आइडिया होता है जिसको हम फिस्कल ड्रैग कहते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज. Fiscal drag is sort of like के no limitations in this case is basically gonna go for AO3. um, मैंने बेसिकली इफेक्ट्स को AO1 और AO2 के अंदर क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं. फिजिकल पॉलिसी AO1 हो जाएगा. एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है AO1. उसके बाद उसका किस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं डिस्कस करो, वो मैंने डिस्कस कर लिया. और फिर अब मैं लिमिटेशंस के ऊपर जा रहा हूँ. ठीक है. इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी बिल्कुल जा सकते हैं इसके अंदर, फिजिकल पॉलिसी के अंदर. इट्स पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय द वे. ठीक है. सो दैट कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस होल थिंग. ओके जी. सो दैट वुड बी दैट इन दिस वन. अच्छा सिंपल सा ऐसे है. अगेन बार बार इसके अंदर मुझे तो फील हो रहा है कि इवैल्यूएशंस जो हैं वो ठीक से इन्होंने मांगी नहीं है, तो मुझे बनानी पड़ रही है. बट तुमको बनानी पड़ेगी. यू हैव नो अदर वे टू यू नो deal with this. Ajay ji, explain the reasons for government using taxes and consider their importance. I think I've done this question. थोड़ा सा पीछे देख लो तो I think reasons and their importance I have discussed. गवर्नमेंट क्यों खर्चे करती है, अच्छे से बताओ. टैक्सेशन कौन कौन से होते हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ. ठीक है. So this is what you're going to be doing in this one. First, types of taxes. Direct, indirect. ठीक है. You can actually talk about progressive and regressive also. But the question is more about reasons for government using taxation. Government क्यों use कर रही है this taxation? Government spending नहीं पूछा, use of government. Sorry, we haven't done this question. Use of government tax. Government क्यों tax लगाती है? So we have few reasons for it. एक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए. ज्यादा अच्छा लिखने का दिल कर रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कौन सी वाली गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको मेंशन कर सकते हो. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल वर्सेस करंट स्पेंडिंग. तुम और भी छोटी छोटी चीजें भी लिख सकते हो. सिंपल पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल लिख सकते हो. देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर. मेरिट गुड्स ये वो सारी, you can go in that direction also. I'm just trying to include whatever the chapter has in it. ठीक है. सो यूज ऑफ गवर्नमेंट टैक्स एक ये हो गया. डीमेरिट कंजम्पशन की रिडक्शन के लिए. ठीक है. तो एक ये हो सकता है. यूर सेइंग सनराइज और सनसेट इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हो, लंबी मत कर देना. बट बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म के लिए, प्रोटेक्शनिज्म.
मेरा तो ज्यादा जो इंक्लिनेशन है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर बल्कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट के लिए फिर मैं वो वाली बात करूंगा इसके अंदर। तो ये हो गया मेरा यूजेज, AO1 AO2, आई थिंक आई कवर इट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, वही तुम्हारी बातें हैं। ये इनकम के ऊपर लगती है, ये डिमांड को रिड्यूस करती है, वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगती है। बाय द वे ये भी एग्रीगेट डिमांड को कम करती है। प्रोग्रेसिव इज जब इनकम बढ़ती है तो एवरेज टैक्स रेट भी बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। और रिग्रेसिव के अंदर जब इनकम बढ़ती है तो एवरेज टैक्स रेट जो है वो गिर जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा इक्विटेबल, दिस इज व्हाट आई मेंट कि मैं ये इसको यूज करना चाहता हूँ इक्विटेबल उसके लिए। तो माय फाइनल इवैल्यूएशन, ये what was the question? And consider their importance. Explain the reasons for governments governments using taxation and consider their importance. Three well explained is sufficient enough. Four will be too much. Uh, and consider their importance. Kiski importance? Tax ki importance? Yeah, explain the reasons for government using taxation. Can anyone give me suggestion कि ये reasons की importance मांग रहे हैं कि tax? Uh, I think I'll go for this one. उसमें I think दोनों cover हो जाएगा। Reason के अंदर देखें जी, सारे reasons ही important है, ठीक है। बट ओवरऑल जब आप टैक्सेशन लगाते हैं तो एक तरफ आपको गवर्नमेंट को एक सर्टेन स्पेंडिंग करनी है, और उस स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट को पैसे रेज करना लाजिम है। गवर्नमेंट पैसे रेज नहीं करती तो फिर बोरो करेगी, उस पे इंटरेस्ट का इशू आ जाएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, तो सिस्टम को चलाने के लिए आपको अमीर के ऊपर हाई टैक्सेस लगाने चाहिए। That is also a very important macroeconomic objective. In fact, it's one of the top five macroeconomic objective, you know. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने प्रोग्रेसिव के ऊपर ही जाना है, बट अगेन गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए फॉर दैट। तो उसके लिए आप यूजली टैक्सेशन के ऊपर रिलाई करते हो, अदरवाइज वो बोरोइंग वाला जो इशू है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, राइट। सो ओवर हियर आई थिंक टैक्सेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। So what I might want to suggest in the evaluation is that um, government has to uh, tax people to finance budget deficit. Otherwise, they may need to borrow, and their debt may rise. In this, progressive taxation will be better
as they are more equitable compared to regressive, as that affects poor people more. So, in conclusion, uh, taxation to finance government budget deficit would be the most important in it. Importance must be in A too. नहीं यार, importance हाँ, government use would be in this, but me answering which one is the most important, वो तो जब मैं obviously यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि government के जो भी reasons वगैरह हैं as to what they are government जो use कर रहा है, इसके अंदर I am sort of like talking about कि इसकी क्या situation है, इसकी क्या situation है, इसकी क्या situation है, but in the end which one is the most important will be my evaluation. That is what you do. इवैल्यूएशन के अंदर ही कंक्लूजन आखिरी के अंदर उसके साथ ही ब्लेंड इन कर लो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर. You don't need to go separate for this. Right? उसके बाद I don't even know how to answer this one. Let me see how we can answer this one. कभी देखा नहीं इस किस्म का क्वेश्चन. बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन में ऐसे हैं इसके. Our class is supposed to happen. Did I start the class early? Really? Anyhow, sorry, recording देख लेना. Discussed whether the size of national debt is important. The size of national debt. National debt क्या होता है? National debt, मुल्क पे कर्जा, right? मुल्क पे कर्जा क्यों होता है? So the thing over here is, I don't know how to answer, but let's try and talk about it. Because इस पे 12 mark दे देना is too much. साइज ऑफ नेशनल डेट के ऊपर देख लेंगे कि क्या क्या चीजों के ऊपर हम जा सकते हैं. You mean the reserves and all of that? That is out of our course, but at least आपकी basic economic logic के अंदर तो ये is still part of the whole thing. Number one, you need to suggest कि भाई national debt जो है वो है क्या? National debt is basically the amount of money owed by a country. ये measure होती है as percentage of GDP. जैसे पाकिस्तान का कोई 100 and something percent है, नाइजीरिया का कम है, नाइजीरिया का कोई 20-30% होगा of their GDP. So ये इस तरीके से होता है percentage of debt. अब गवर्नमेंट का जो डेट होता है वो डिफरेंट तरीकों से होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का जो टोटल डेट होगा, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेट. जो गवर्नमेंट का डेट होता है वो बेसिकली आता है, जो आपका पब्लिक सेक्टर डेट होता है, वो होता है बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ
जो आपका बजट में डेफिसिट आता है ना, बजट डेफिसिट, यानी कि अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज मोर देन द टैक्सेशन, तो वो जो पैसे कम पड़ रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, बोरोइंग, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हर साल पब्लिक सेक्टर कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, पीएसबीआर कहते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि बजट हर साल बनता है, और हर साल आपके पास एक डेफिसिट अगर आ रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रक्चरल डेफिसिट ज्यादा है, तो आपको हर साल जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी ग्रेटर देन टैक्सेस, तो आपको पैसे बोरो करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन द टैक्सेस, और आप बोरोइंग करते हो उसके लिए। जब आप इस बोरोइंग को, दिस इज बेसिकली योर ईयरली बोरोइंग। सो national debt is basically a stock concept, which is that it is the accumulation of yearly borrowings, which obviously you haven't returned. ठीक हो गया? तो ये तुम्हारा जो होता है, ये तुम्हारा बेसिकली नेशनल डेट का एक आइडिया होता है। Every time a country has a surplus, you can use that money to pay off your debt. Okay? So government budget surplus can be used to reduce national debt, ठीक है, that is one of the things। और क्या है इसके अंदर, जब नेशनल डेट बढ़ता रहता है, अब साइज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ डेट टू जीडी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, स्मॉल परसेंटेज of debt to GDP ratio is not a problem for the government, as their interest payments will be less, ठीक है, and the government will be able to pay them off much more easily, ठीक है। But the problem is that the large percentage of debt to GDP requires large interest payments, which can take a country into debt trap. This means that most of government tax revenue will go toward interest payments, and so government will have to cut down expenditures towards
education, health, and development. And that is basically going to take you into much deeper problems. So the greater the percentage, the greater the problems will be. Like you can see, Pakistan, हर दूसरे दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे बोरो करती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये हो गई है कि गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा उधार चुकाने की इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं कि आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका मेजॉरिटी से ज्यादा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। और फिर जो गवर्नमेंट के पास बचता है वो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं सारी मेजर चीजों के लिए। और फिर सारे चीजों के लिए गवर्नमेंट को जो है पैसे बोरो करने पड़ते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का केस ये है कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट पे कर दो और आर्मी के खर्चे के पैसे दे दो तो पैसे खत्म हो जाते हैं आपके पास। अब जो तुमने गवर्नमेंट रन करनी है और एजुकेशन और हेल्थ केयर है ये सब बोरोर के ऊपर होता है। तो आप क्या कहते हो, एजुकेशन एक्सपेंडिचर को कम करो, डेवलपमेंट को कम करो, गवर्नमेंट को रन करने के जो खर्चे हैं वो हमने करने हैं, और फिर आप एक्सेसिवली डेली बेसिस पे बोरोइंग करते हो। दिस टॉपिक हैज मच मोर डिटेल इन इट बिकॉज द थिंग इज के गवर्नमेंट जो बोरो करती है ना वो दो सोर्सेज से बोरो करती है, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। ठीक है, ये जो पब्लिक सेक्टर बोरोइंग है, देखो पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं नॉन इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर, क्योंकि इम्पोर्टेड चीजों पे तो डॉलर चाहिए होता है, वो छोड़ो। पाकिस्तान को के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रन करने के लिए रुपया चाहिए। रुपया हम बोरो कर सकते हैं पब्लिक से बॉन्ड्स इशू करके और प्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स रोजाना के तौर के ऊपर बॉन्ड्स निकालती है और उस पे लोगों से कहती है कि ये बॉन्ड खरीद लो, हम तुमको इंटरेस्ट की पेमेंट्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और लोग कहते हैं कि यार इतना तो उधार ले लिया है, रोज आ जाते हो उधार लेने हमसे। ये पाकिस्तानी पब्लिक का मसला हो रहा है कि रोज आ जाते हो उधार लेने, लेकिन चलो आप इंटरेस्ट तो हमें अच्छा दे रहे हो, इन्फ्लेशन भी के करीब करीब भी है, तो चलो हम दे देते हैं आपको पैसे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सॉवरेन बॉन्ड है, ये डिफॉल्ट नहीं होते यूजुअली, दे वोंट गेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब इसकी लॉजिक पीछे ये है कि आप गवर्नमेंट को पैसे दे देते हो, गवर्नमेंट आपको बॉन्ड दे देती है, आप सालाना इस पे इंटरेस्ट कमाओगे। गवर्नमेंट का ये डेट बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है कि अब वो गवर्नमेंट तुम्हारा इंटरेस्ट पे करती है प्रिंटिंग करके। ठीक है, उससे इन्फ्लेशन आती है, तुमको तो पैसे मिल जाते हैं लेकिन बाकी लोग मर जाते हैं इकोनॉमी के अंदर जिनके पास ये पैसे नहीं आ रहे, बिकॉज उनके पास कभी थे ही नहीं पैसे बॉन्ड्स खरीदने के लिए। तो अमीर इज बेसिकली बेटर ऑफ इन दैट केस, क्योंकि उसके पास एटलीस्ट कुछ हाई परसेंटेज इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा है। द थिंग इज, इसके अंदर अंदर की बात बता दूं, इसके अंदर आपको पता है कि ये गवर्नमेंट से कभी भी ये पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आपको गवर्नमेंट से ये पैसे इन परपेचुइटी मिलते रहेंगे। गवर्नमेंट हर साल तुमको ये इंटरेस्ट देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। ठीक है, और आप पैसे कमाते रहेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि ये बॉन्ड तुमको वापस मिल जाएगा। इनफैक्ट आफ्टर फ्यू इयर्स यू वोंट इवन केयर, क्योंकि जब तुमको 20% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर तो 5 साल के अंदर वो बॉन्ड फ्री हो जाता है। 6 7 8 9 साल के बाद तो आप प्रॉफिट्स के अंदर होते हो, तो यू डोंट केयर अबाउट प्रिंसिपल, आपको बस इंटरेस्ट पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से लोग खरीदते हैं। फिर एक जो इंपोर्ट आप बाहर से मंगाते हो जिसके लिए डॉलर चाहिए, वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जिसके लिए आप इंटरनेशनल मार्केट से जो है उधार लेते हो और फिर तुमने वो उधार पे ऑफ करना होता है। दैट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसके अंदर फिर तुम्हारे करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन लोन्स जो कि तुमको डॉलर में पे करने होते हैं, तो फिर वो उसके डॉलर इश्यूज आते हैं। यहाँ पे हम वो डॉलर इश्यूज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोकल बोरोइंग और उसकी बात कर रहे हैं। तो खरीदो बॉन्ड्स, खरीदते जाओ। बहुत ही पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है अगर, ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता है तो कमाओ पैसे अच्छे से, यू नो, other than तुम हलाल हराम का इशू ले आओ, नो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट या ठीक है,
तो अब इसका कंक्लूजन क्या है एट द एंड ऑफ द डे? डिस्कस वेदर द साइज, ऑफ कोर्स। इन कंक्लूजन, जितना तुम्हारा गवर्नमेंट का डेट कम हो, उतना हेल्दी इकोनॉमी होगी, उतना गवर्नमेंट की रिपेमेंट्स आसानी होंगी। uh, अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बढ़ रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बेसिस पे होना चाहिए, करंट स्पेंडिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में तुमको रिटर्न्स देगा, तो वो तुम्हारा फ्यूचर में साइज कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग। या सॉरी। सो अगर कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर आप डेफिसिट ले रहे हो और बोरोइंग कर रहे हो, वो पैसे तो तुम खर्च कर दोगे, खर्च हो गए उसी साल, और अब तुम्हारे ऊपर जो है रिटर्न्स तुम्हें पे ऑफ करने हैं, वो कहीं और से लाने हैं, तुम्हें लोगों पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लियरली इसके अंदर तो देयर इज नो डाउट दैट स्मॉलर डेट इज बेटर। ठीक है। और अगर लार्ज भी हो रहा है तो वो कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर होना चाहिए, और वो करंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द इकोनॉमी। ठीक है। तो a large deficit is definitely not good at any point. Now, Japan has one of the largest percentage of debt, लेकिन और पाकिस्तान का उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन हम जापान को ये नहीं बोलते कि यार ये तो बड़ी एक कोई ट्रबल्ड इकोनॉमी है, although they are a very large troubled economy. इसमें बहुत केस स्टडीज आ रही हैं in the past few couple of years in fact। तो उसके ऊपर डिस्कशन तो होता है, एटूज में ज्यादातर है। ठीक है। तो यू नो लार्ज परसेंटेज इज बैड ओवरऑल, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है इंटरेस्ट पे ऑफ करने की, तो देन यू नो at least you're not so bad as compared to the ones which have issues, especially with current spending। ठीक है। If budget deficit is leading to growth in the long run, isn't that good? बिल्कुल हो सकता है, अगर पब्लिक सेक्टर बोरोइंग है, which might increase the economy। बट अगेन अगर वही बात है कि अगर कैपिटल की तरफ हो रहा है, तो आपको पता है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी सस्टेनेबल होगी, पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा होगा, तो यू कैन अर्न फ्यूचर टैक्सेशन। लेकिन अगर वो करंट स्पेंडिंग के ऊपर रिलाई कर रही है, तो पोटेंशियल इज नॉट ग्रोइंग। You might be able to earn a little higher taxes, but अगर तुम्हारी वो current spending is bad, so that's a problem। So great point। uh, it's open ended, जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो इस आंसर को लेके जाओ, but that is what the evaluation sort of gonna look like।